एंड जिस तरह से द फैमिली ने बोला हम लोग को कि some बाबा केम थे एंड दे टोल्ड द फैमिली कि आपको ना एक सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया में, पता नहीं कौन सा शहर है, कौन से गांव में उन्होंने बोला था आपको यहाँ पे जाना है। वहाँ पे उस गांव में ना, उस जगह पे देयर इज़ एक पेड़ है, आपको वहाँ पे जाके ना पूजा करनी पड़ेगी उस पेड़ के नीचे। एंड द फैमिली एक्चुअली डिड दैट। हेलो गाइस, वेलकम टू द हॉन्टेड शो। आज हमारे साथ जुड़ी है मेघना पोरवाल मैम। मेघना जी ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के साथ कई साल काम किया है और मेघना जी बाय प्रोफेशन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। तो आज हमसे वो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो मेघना जी, वेलकम टू द हॉन्टेड शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। सो मैम, ये सब आपने इस फील्ड में काम करना कब शुरू किया? इस फील्ड में आई एम सिंस 2015, जब मैंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ज्वाइन किया था। एंड हाँ, तब से मैंने कोर्स किया था इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के साथ, which was an online course, and since then I've been with the team since 2015. और आपकी पहली केस आपको कोई याद है जो आपने रिजॉल्व की थी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के साथ? तो हम लोग को एक केस आया था, इट वॉज अ रेजिडेंशियल केस। एक्चुअली आई डोंट क्वाइट रिमेंबर मच ऑफ द डिटेल्स, बट हम लोग का एक केस था वर्ली में, आई थिंक रेजिडेंशियल केस था हम लोग का। एंड उस टाइम पे हम लोग के बहुत बेसिक गैजेट्स थे। ओके। वी वर स्टिल यूजिंग आर डिजिटल कैमराज ओनली। हम लोग पास शायद एक ही EMF एक ही EVP रिकॉर्डर भी था शायद उस टाइम पर। एंड उस केस का आई डोंट क्वाइट रिमेंबर मच डिटेल्स, बट वहाँ पे हम लोग को ऐसा कुछ मिला नहीं था उस केस में, बिकॉज आई थिंक इट वॉज मोर दैट द क्लाइंट हु वॉज एक्सपीरियंसिंग ऑल दीज थिंग्स, वो मोस्टली मेडिकल इश्यूज थे क्लाइंट के साथ। ओके। she was going through, the client was going through a lot of things in her personal life, जिसके वजह से the rest of the family members were thinking कि शायद she is possessed or something like that, but when we went there we did not find, ऐसा कुछ हम लोग को मिला नहीं था वहाँ पे जो हम लोग टर्म कर सके पैरानॉर्मल है। With the way the client was, the behavior, the family and everybody, so we pretty much concluded that it is a family issue or medical, including medical issues with the client, plus उनकी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, so all that was सब कुछ एक साथ हो गया था सब। उसके वजह से they were thinking that कि maybe she's possessed or something, but ऐसा कुछ नहीं था। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ओपन अप नहीं होते इन सारी चीज़ों के बारे में। वो कई और तरीके अपनाते, कभी किसी मांत्रिक के पास चले गए, या फिर कुछ लोगों को लगता है कि ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या फिर वो उन्हें निगलेक्ट कर दिया, और बाद में जब वो आपके पास आते हैं तब बहुत लेट हो जाता है। तो वैसे कंडीशंस में क्या होता है कि कैसे डील करते हो आप ऐसी चीज़ों को? I mean, late, I wouldn't say late हो जाता है। I mean, that is like a, हम लोग क्या हो जाते हैं, लास्ट रिजॉर्ट टाइप का हो जाता है। अगर if everything else fails, तब वो हम लोग को बुलाते हैं, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है। a lot of cases में सब all these तांत्रिक वांत्रिक सबको बुला के सारे पैसे उन लोग के खर्च हो जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ डूइंग। किसी को आप बुलाते हैं आपके घर में, उनको मानी ये करो वो करो, तो उन सब में जितने फाइनेंशियल लॉस जो होता है उसका, सो आफ्टर ऑल दैट एंड नथिंग वर्क्स देन समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली। तो we see, when we go for investigations we keep an open mind. I'm not going to say that we are very very scientific with the approach, but we try and see ki our equipment is there to help us capture evidence. We also have personal experiences, right? But the personal experiences, I say, we cannot record and all that. We can just share that. I'll give you an example, okay?
there was this client of ours, and that client was suffering for years. Okay. years. एंड जब उसने हम लोग को अप्रोच किया तो हम लोग को बोला था कि 2-3 तांत्रिक वांत्रिक बाबा लोग आए थे और उन्होंने बोला कि ये पोजेस्ड है, सम डिस्टेंट रिलेटिव का पोजेशन है उसमें, एंड उसकी तीसरी आँख खुल गई है, एंड सो यू वर लाइक कि ओके, एंड देन सो यू लाइक आपने इसका मेडिकल चेकअप करवाया है? दे सेड हाँ करवाया है, दे सेंट अस द रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग, मेडिकल जो प्रैक्टिशनर ने दिया, एंड रिपोर्ट में क्लियरली लिखा था दैट द क्लाइंट वाज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया इन द पैरानोया स्टेज. बट अनफॉर्चुनेटली अभी व्हेन समबडी इज मेडिकली प्रूवन कि उसको कोई कंडीशन है, दे नीड मेडिकल हेल्प. तांत्रिक बाबा ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे उनको, राइट? इवन वी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट. बट द फैमिली मेड अप देयर माइंड. उन्होंने ऑलरेडी अपने दिमाग में ये भर के रख दिया था, दे हैड ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड कि दैट क्लाइंट इज पोजेस्ड. I don't know whether they gave the client any medical treatment or not. But then when we asked them, the doctor has written a prescription. Are you giving the prescription? They would nahi, the client is not taking it. वो spit out, ये फलाना वो फलाना. I said you have to find different ways to do it then. He says no. ये पहुँचे हुए बाबा आए थे यहाँ पर, उन्होंने बोला कि हमारे कोई some relative जो पास अवे हो गए उनका वो पोजेस कर रहे हैं इसको. एंड व्हाट हैपन्स इन स्किज़ोफ्रेनिया नाउ, स्किज़ोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू व्हाट हैपन्स इन अ पोजेशन. सो द क्लाइंट वाज डिस्प्लेइंग सिम्टम्स ऑफ दैट. आई मीन देयर वाज नो वोकल टोन इन द क्लाइंट. आई मीन द क्लाइंट कुड नॉट टॉक. एंड जब वो कुछ बोलते थे देन the family was like, oh, she's talking in a different language. And her movements, limb movement was not matching with what was happening. So the brain was not matching her neurological system was not matching with her limbs or brain function or anything. That is what happens in schizophrenia. तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो possessed है और वो किसी और भाषा, talking in tongues जैसे बोलते हैं हम लोग, वैसे हो रहा था. So we went there because the client was, we felt that the client was so desperate for help. So we will not take the case like this. We will say, no, the client needs medical attention. There is nothing that we can do. But the client was the family was so desperate. You could make out in the voice when we used to speak to them over the phone, that desperation, on the verge of tears, desperation, please help us. We have nothing left now. And they were like, we will pay you anything, just help us out and things. I said okay, fine, we'll come there, we'll do an investigation. And we spent the whole night there, but हम लोग को कुछ नहीं मिला. We saw the client, we saw the condition that the client was in, and once again we were like, she needs medical help. There is nothing that we can do. But convincing the family was the more difficult part for us. लेकिन the thing is कि अगर आपने अपना mind ही set up कर लिया है कि possessed है तो possessed ही है, then there is nothing in the world that would you need something really powerful to help you undo that mindset of yours. So after spending the whole night, we never got anything on. कुछ नहीं मिला paranormal evidence because we know what was going on. And we told them कि look, this so and so is the case. They even offered us a fee and also, but we did not take the money because we didn't do anything. So why would I get paid for not doing anything? It doesn't play well on our conscience. We don't want to take advantage of people that way. एंड जिस तरह से द फैमिली ने बोला हम लोग को कि some बाबा केम दे एंड दे टोल्ड द फैमिली कि आपको ना एक सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया में, पता नहीं कौन सा शहर है, कौन से गांव में उन्होंने बोला था आपको यहाँ पे जाना है. वहाँ पे उस गांव में ना, उस जगह पे देयर इज़ एक पेड़ है,
आपको वहाँ पे जाके ना पूजा करनी पड़ेगी उस पेड़ के नीचे. And the family actually did that. अभी in cases में there is nothing that we can do as paranormal investigators. So ऐसे cases में कोई conclusion नहीं होता. The conclusion lies in the hands of the family. How they want to conclude it. Paranormal investigators कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें. मतलब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर घर के एंटिटी को निकाल सकता है, मगर किसी के मन में अगर कोई एंटिटी है तो वो कैसे निकालेगा? वो तो आप ही निकाल सकते हैं ना. उससे आपको ही डील करना पड़ेगा. एग्जैक्टली. आपके मन के डीमंस को आपको ही डील करना पड़ेगा. आई कैन नॉट डू एनीथिंग विद इट. ऐसे केसेस में आप क्या डील करते हो? जैसे कि अगर कहाँ पे एंटिटी है किसी घर में और आपने वो निकाल दी वहाँ से या फिर सब सॉर्ट कर दिया, तो उसके बाद भी जो डर रहता है क्लाइंट के मन में, तो तभी आप क्या करते हो? डिपेंडिंग ऑन व्हाट द क्लाइंट वांट्स. इफ दे वांट कि हम लोग वहाँ पे क्लेंजिंग करें तो ही हम लोग क्लेंजिंग करते हैं. अदरवाइज यूजुअली they are not malicious, like I said. Yeah. They are not there to harm you unless they are actually harming you. They're not there to harm you or anything. तो हम उनको बोलते हैं कि ये आपका घर है. You need to make it clear with the entity that this is your space now. We don't have a problem कि आप यहाँ पे रहो. But don't hamper our day-to-day work. Don't harm us. Right? Physically, mentally, emotionally, spiritually, do not harm us. Otherwise, we will have no other choice but to do something to let you go from here. Once again, all these things also depend on how strong your belief is. Yeah. How strong your faith is. जितना strong आप रहोगे, उतना ही वो work करेगा. You show a little bit of fear or hesitation, it's not going to work. So that is how we always, at the end of the session or the investigation, we will ask the client, what do you want to do next? Like अगर हम लोग कुछ मिला ही नहीं है तो क्या करेंगे? Right? This night that we've come, we've not found anything. Right? Not saying that there is nothing happening here, but tonight, nothing. We did not find anything. However, अगर फिर से हो रहा है, आप हमें फिर से कॉल कर दीजिए, or you try and see if you can record things, you know, अपने आप कैमराज, अगर if you have a camera तो CCTV कैमरा डाल दीजिए या अपने फ़ोन के रिकॉर्डिंग से फ़ोन के कैमरा से कर दीजिए or whatever. So on the basis of that, then we can also make a decision कि we have to come back or not. But the entire thing depends on the client. How they want to deal with it. If the client wants to leave the property, you cannot force the client to stay there. Leave the property and go then. We don't ever recommend the client leaving the property. I mean, आप कहाँ जाएंगे? Yeah. Right? It's not that easy to find places in Bombay or, you know, how the expenses and all that. We don't recommend. So we always try and help them in whatever way we can. If they want to call us continuously and take consultations, we do that as well. We never say no. आप हमको 10 बार बुलाए, हम 10 बार आ जाएंगे. But that is what our job, you know. That's the part of our job. We are here to help you. But there are certain times that we figure out what the problem is. Like for instance, there was a case that we did, and initially we couldn't figure out. I mean, there was things happening, but we could not figure out what was going on and all that because client, जैसे आप बोलते, client open नहीं होते ज़्यादा. Yeah. They were not very open with us of what कि actually हो क्या रहा था. Then one of our investigators started talking to the client in the regional language. तब उन्होंने open up करके बताया कि actually क्या हो रहा था. Okay. That's how then we stopped our investigation, and then we like, okay, we have to relook this entire investigation in a different way now. Okay. Yeah. So then we changed our whole questions to the entity. That's when we started getting the responses that we were actually looking for to help the client as well as help the entity. And after the end of the investigation, जब हमने अपने evidence analysis किया and we saw what we got in our evidences, then we told the client, this is what you need to do if you want this entity to stop worrying you. You made a promise to this entity, you need to fulfill this promise. You did not fulfill the promise, that's why the entity is here worrying you all.
So that was the thing. The client made a promise to the entity, which was the entity was part of the client's family. Okay. So the client made a promise to the entity, which they did not fulfill. And that's why the entity was hanging around and trying to get their attention, to understand. I mean, to tell them that, dude, you did not do what you promised. And that's what we told the client. You need to finish this job. Keep your promise. And I think after about a month or so or something, when we got in touch with the client again and we asked them what's going on, then the client told us, we did what you told us to do. We fulfilled our promise to the entity and everything is calm now in the house. Back to normal. सो आपने पहले बताया कि एंटिटी अगर किसी के मन में हो तो वो उसे डील करना पड़ता है. तो किसी एंटिटी से आप जब टकरा जाते हो तो आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट क्या होती है और आप कैसे डील करते हो उस सिचुएशन में? See, like I said, we need to be very open about it. So far अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि किसी एंटिटी ने कोई साइकोलॉजिकली इफेक्ट किया है. आई मीन इतनी बुरी तरह से नहीं. ओके. बट एक दो बार ऐसा हुआ है कि बट देन यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. फॉर मी आई डू अ क्लेंजिंग, प्लेन सिंपल क्लेंजिंग आई डू फॉर माई सेल्फ. इफ मुझे ऐसे लगता है कि कोई अटैचमेंट है मेरे साथ, कोई एनर्जी अटैच करती है, तो फिर आई डू अ क्लेंजिंग. आई मीन even if I don't feel anything after every investigation, I come back home and do a cleansing for myself. Okay. So that if there is any कोई भी एनर्जी का अटैचमेंट है या कुछ रेजिडुअल रह जाता है मुझ पर, वो सब निकल जाएगा. बिकॉज फिर it's not just affecting you if there is an attachment. It is affecting your family as well. Yeah. है ना? So we don't want that. And what I do is like everybody in my team has a different way of investigating. So what I do is when we go for an investigation, when I go for an investigation and we are leaving the property, I always either in my mind or I'll tell them loud that you are not allowed to follow me home. You have to stay here only. You're not allowed to follow me home. That's it. That's how I will deal with, if anything, if there is an attachment. Because मेरे साथ एक attachment हुआ था and it took me 1 week to get rid of it. And it really affected me. बहुत ज़्यादा मेरे को affect कर रहा था वो. And luckily for me at that time, Gaurav was there to help me out. He figured out that there was something wrong with me. Okay. I also did not figure out that something was wrong with me. He was the one who figured it out. And he helped me out with the attachment. एंटिटी आपको ओवरपावर करती है? It doesn't happen immediately. It takes time. I mean, that depends also. आप किस entity से आपका पाला पड़ता है and how. Okay, for example, there was this case that we did, a residential case, and it was a very active case. बहुत ज़्यादा वहाँ पे कुछ ना कुछ हो ही रहा था. And when we came back home from the investigation and I was sitting and doing analysis, the same thing, which was because of the attachment thing that I was talking, the same case. The attachment that happened to me, I don't know what was it, but I was provoking at the time of the investigation. Which now I think of it, I should not have done that. But then I did it, so I had this experience as well. So I was sitting and analyzing the evidence. And suddenly मेरा पूरा mood change हो गया था. Okay. In the sense कि I was getting very angry, very very frustrated, and मुझे ऐसा लगता था सब लोग मेरे घर में ना उसी दिन वही दिन मिला था सबको मेरे को irritate करने के लिए. And I just wanted to smack everyone, literally. I didn't want anyone. मेरे आजू बाजू कोई मत आना, वरना जो भी मेरे हाथ में होगा या मेरे सामने था, I will hit somebody. इतना bad, I was in that condition. I did not know what was happening. Okay, so I was seeing pictures. I think उस property पे I think we had taken about more than 500 pictures. उस 500 pictures में मुझे एक ऐसा picture मिला था जिसके वजह से मेरे साथ ये सब होने लगा था. Okay, and so
And I still could not put two and two together. I was talking to Gaurav on the phone because I was trying to figure out कि मेरे को what software to use to check the CCTV footage. तो मैं बात कर रही थी and Gaurav was like, मेघना तुम बात तो कर रहे हो लेकिन मैं समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो. I said, what do you mean? He's like, you're fumbling and I don't understand a word you're saying. I said, this is what I'm saying. He says, no. First tell me what happened at the case. So I told him so and so, ये हुआ था वो हुआ था केस में and हम लोग के कैमरास गिर रहे थे, we got locked in the room and ये फलाना वो फलाना हो रहा था. And then I told him कि I was just sitting and checking in the pictures and I think I saw something but I don't know. Then he's like, what did you see? I was like, I saw so and so. So he's like, okay, what did you do when you came back home? I said, I went to sleep. He said, after that? I said, nothing. I sat the evidence analysis. He's like, I want you to stop everything. Full stop karo sab pe. Go and do a cleansing. And at that time, I did not know what a cleansing was. So I was like, what do you mean? What does it mean? You need to tell me. So he told me, simple cleansing is salt water bath. So what I saw in the picture was, for me, it was I saw the devil. Okay. And I know it was not there because आज तक मैं वो pictures फिर से देखती हूँ मुझे कुछ नहीं दिखता उसमें. Okay. So उसी time पे मुझे दिखा था वो. And it happened over a series of pictures. Okay. And उसके देखने के बाद when I think of it then उसको देखने के बाद that's when my demeanor changed. मेरा पूरा mood change हुआ था उस time पर. And so cleansing के लिए I got myself prepared for cleansing. वो जो पहला मग्गा पानी का जो मैंने डाला था अपने सर से, I felt something leave my body. Okay. Literally something leave my body. And every time उसके बाद जो मैं पानी डाल रही थी अपने ऊपर, I was hearing this screaming in my ear, in my head, scream. इतना जोर से, it was not even me screaming, it was something else screaming in my head. And I could just feel something leaving. ऐसे यहाँ से bits and pieces में सब कुछ निकल रहा था मेरे में से. इतनी energy थी मेरे, I mean, whatever that energy was, it was so strong that it was taking time to leave my body. And I did that cleansing for 1 week. Okay. It was so strong because next day again I felt the same thing. And again I spoke to Gaurav and Gaurav said, every time this happens, you do this continuously till the time I don't come there to Bombay. And अगर तब तक भी नहीं गया ना तो फिर मैं तेरे को cleansing करूँगा. So I was like, okay, fine. 1 week that attachment was with me. And after that even I forgot about it completely. It is only now that when I sit and talk to people like podcasts में different होता है तब ये topic उठता है. Then only I remember. Otherwise I don't really remember all these things. So that was the major thing, how I dealt with it. Yeah. These kind of attachments that happen. Sometimes attachments happens with me when I'm not even at an investigation. इसी वजह से बड़े बुजुर्ग हमें कहते हैं कि किसी की डेथ होने के बाद हम अंतिम संस्कार करते हैं. तो जब आप वापस घर आते हो तो आप पहले नहा लो. So whatever जो energy, like if you go to a graveyard or go to a cemetery, जो भी है, whatever energy, जो भी energy वहाँ पे lingering है, अगर आपको attach हो जाती है या नहीं भी होती है, it is better to be safe than sorry, right? Yeah. So होता है. और ये क्या और मेथड्स है इसके क्लींजिंग के कि क्या करते हैं? See, I do a salt water bath. Okay. You sit for meditation also. The people use crystals or sage or Palo Santo. Say you can do that also, a cleansing method. But for me, I just try the salt water bath. If that doesn't work, then I'll just sit on the floor, and then I'll just imagine all that thing getting sucked up inside in Mother Earth. And I'll just sit there till I don't feel better. That's how I do it.
Sometimes I even do sage just all over me or Palo Santo all over me if I feel that there is a lot of heaviness or बहुत अजीब सा लगता है कभी कभी ऐसा ना अजीब सा ही लगने लगता है मुझे so then I just do all that or I'll sprinkle holy water or put holy oil all over me and all that ऐसे like this is what I do for me because मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ ज़्यादा अटैचमेंट्स होते हैं and it's become like a common occurrence for me now कुछ भी अटैच हो जाता है सो आई फील वेरी ना आई जस्ट मेड इट अ पॉइंट कि एवरी 10-15 days आई डू अ क्लेंजिंग ऑफ माई सेल्फ थैंक यू सो मच मैम इस शो पे आने के लिए और हमें एनलाइट करने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी आई रियली अप्रिशिएट इट थैंक यू. आई होप आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल द हॉन्टेड शो. थैंक यू सो मच.